Hi friends, welcome to Unacademy, India's largest online learning app. We are going to provide you support for IIT, JEE, NEET, UGC, then SSC exams, MPSC, UPSC class 9, 10th, 11th and 12th also. You can ace your final exams with Unacademy Plus subscription. So Unacademy Plus subscription is at flat 10% off discount. So, dear learners, welcome to the class. I am Trupti Deshmukh. I have done my Masters of Computer Engineering. So, I am going to teach you subjects like C, C++, C Sharp, ASP.NET, programming in Python, as well as I am going to teach you the subjects like information technology for class 9, 10th, 11th, 12th, and also computer science for class 9, 10th, 11th, 12th. So, please वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें. So students, let's get started with the today's lecture. So the next thing is Unacademy's awesome special classes. Yes, we are having the live real-time interactions using chats and emojis. Yes, Unacademy के जो हमारे स्पेशल क्लासेस है वहाँ पर आप लोग लाइव रियल टाइम इंटरेक्शन कर सकते हैं by using chats and emojis. Yes, obviously you are going to have poll leaderboards and you can compete with your friends also. वहाँ पर कुछ polls हो गए leaderboards. So उसमें क्या होगा, आपकी पढ़ाई की पढ़ाई भी हो जाएगी and yes you will have the fun with learning. And the next feature of these special classes is you can ask questions using the question tab. You can see the screenshots here. The question, you can type your questions related to the subject and directly send to the teacher also. So ये हमारे Unacademy के some of the special classes के features है. That is, you are going to have live real time interaction using the chat and emojis. Then you can have the live quiz through pros. So pro leaderboards में आप लोग क्या कर सकते हैं? You can have the competition with your friends also, and you can ask the questions using the question tab also. Then next, how to watch these special classes also. देखिए आप लोग क्या कर सकते हो, पहले यू कैन डाउनलोड दी अनअकैडमी लर्नर ऐप. जो स्टूडेंट्स है वो लर्नर ऐप जो है डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं. यू कैन गो टू दी गूगल प्ले स्टोर, और आपका अगर एप्पल का है तो यू कैन हैव दी एप्पल स्टोर ऑल्सो. सो वहाँ पर आप लोग अनअकैडमी लर्नर ऐप के लिए सर्च कीजिए एंड यू कैन डाउनलोड दी अनअकैडमी लर्नर ऐप. देन इंस्टॉल इट, डाउनलोड कर. वहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, ओपन दी ऐप एंड क्लिक ऑन गेट स्टार्टेड. ठीक है, आपका ऐप ओपन हो जाएगा. Then next step is you have to enter your mobile number and OTP. आपका जो करंट मोबाइल नंबर है आपको यूज करना है. then you will get one OTP and based on that OTP you are going to sign up using the email ID. So next step is you have to enter your full name, then your mobile number will be already registered. Then enter your email address and state of the register. So this is the step to watch the special classes. That's the last step is sign up using the email ID. First one, download the Unacademy Learner app, then open the app and click on get started. Then enter your number, that is mobile number and OTP, and lastly sign up using the email ID. Then next step is that is select the classes from class 6 to class 12. It is what goal you are preparing for. You can select for the competitive exams, as well as if you are going for the class CBC classes 6 to class 12, you can go for that also. ठीक है, CBC क्लास 6 to 12 आप लोगों ने सेलेक्ट कर लिया. उसके बाद आपके डिफरेंट क्लासेस आएंगे, क्लास 6 to class 12 एंड आल्सो द क्रिएटिव कॉर्नर. देन आपको क्या करना है, यू हैव टू सेलेक्ट योर ओन क्लास. देन नेक्स्ट, विच लैंग्वेज यू वुड प्रिफर टू लर्न, कौन सी लैंग्वेज में आप लोगों को पढ़ाई करें. सो यहाँ पर सेलेक्ट योर प्रिफर्ड लैंग्वेज. सो यू कैन यूज इंग्लिश, हिंदी, और हिंदी एंड इंग्लिश, both mixed. Then next what you are going to do, go to the description of this video, the video which I am playing now, and click on the special class link. यहाँ पर special class की जो link है वहाँ पर आप लोग चाहिए. Then click on notify me and you will get denotified 10 minutes before the class begins. And you can use the code to unlock the special classes for free. So hi friends, welcome to today's lecture. So today we are going to see class 10th information technology code 402 under NSQL. So what will we study today? So today we are going to continue with our topic, that is introduction to the databases.
यस, अभी लास्ट लेक्चर में हमने इसके कुछ कंटेंट्स देखे थे. That is introduction to the database, then how database are going to function, database functioning. Then next point which we have seen, how databases work, database actually work कैसे करते हैं. Then उसके बाद हम लोगों ने देखे थे some of the advantages of the database. Likewise, the database maintains the consistency, it avoids the data redundancy. Then database can control the data consistency to a large extent. Then it facilitates the sharing of data, then it enforces standards and can ensure the data security. So we have seen some of the advantages of the databases. हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखे थे एडवांटेजेस. सो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जो देखने वाले हैं दैट इज फ्लैट वर्सेस रिलेशनल डेटाबेसेस. सो ये क्या होते हैं, पहले लेट मी डिफाइन व्हाट इज फ्लैट एंड व्हाट इज रिलेशनल डेटाबेस. Flat versus relational data. So when what we can say, all the data is stored in one file, then such a database is called flat database. When all the data is stored in one file, then such a database is called as the flat database. अगर पूरा डेटा आप लोग एक फाइल में स्टोर करते हो तो उसको हम लोग कहते हैं फ्लैट डेटाबेस. So a spreadsheet is an example of flat data. ठीक है, स्प्रेडशीट जो है फ्लैट डेटाबेस का एग्जांपल रहेगा. देन व्हेन द डेटा is stored in multiple tables, then that are linked via common fields, then such a database is called relational database. And software handling relational database is called RDBMS, that is relational database management system. So इसके एग्जांपल्स रहेंगे Microsoft Access, then based in OpenOffice.org, then Oracle, MySQL, then MongoDB, IBM DB2 and so on. So देखिए, एक अगर when the data is stored in multiple tables, एक multiple tables में आप लोग डेटा स्टोर कर रहे हो and these tables are linked via some common fields, then such a database is called as the relational database. और जो सॉफ्टवेयर उस रिलेशनल डेटाबेस को हैंडल करता है तो उसको हम लोग कहेंगे RDBMS, दैट इज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. सो इसके एग्जांपल रहेंगे Microsoft Access, based in OpenOffice.org, Oracle, MySQL, MongoDB, IBM DB and so on. So what we can say, a table in an RDBMS is given a special name that is called as the relation. देखिए टेबल को हम लोग क्या कहेंगे, टेबल is nothing but in RDBMS is a special name that is nothing but the relations.
So now next point we are going to study is that is अभी हम लोग जो डेटाबेस देखने वाले हैं that is database management system of Microsoft, that is MS Access. So here देखिए आप लोग we know that the database is collection of the information that is related to a particular subject or the purpose. For example, a student database is there, then event management database is there, and so on. So अभी हम लोग देखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का जो डेटाबेस होता है एमएस एक्सेस का, दैट इज इट इज अ पॉपुलर आरडीबीएमएस, दैट इज रिलेशनल database management system, a system that manages data in terms of special tables called as the relations. So now let's you manage your database by offering a variety of features. So in MS Access, you can manage all your information in a single file and that stores all the needed information files. So अगर उसकी डेटाबेस फाइल आप लोग सेव करोगे तो उसका एक्सटेंशन जो रहेगा .accdb, इट इज एक्सेस डेटाबेस रहेगा, which expands to MS Access databases. So within this file, you can divide your data into separate storage locations. The container is called as the tables, then views, add and update the table by using online forms, then find and retrieve just the data by using the queries, then analyze or print the data in specific layout by using the reports. So अभी यहाँ पर देखिए टेबल क्या होता है, a table refers to the container used for storing the data and pertaining to single object. Subject or purpose. So देखिए what we can say in other words, Access offers following features to let you manage your data. So first one is the tables, then second one is the queries, then third one is the forms, and fourth one is the reports. So tables, queries, forms and reports. In this way we can store the data. Now we will see the first point, that is the tables. जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा टेबल क्या होता है, a table refers to a storage container which is storing the data pertaining to a single object, subject on a purpose. So to store your data, आपका डेटा स्टोर करने के लिए you can create one table for each type of information that you can track. So to bring the data from multiple tables together in a query, form or report, you can define the relations between the tables. So a table in a relational database is called as a relation. So now let us see what are the different components of a table. Tables के different components क्या होते हैं. So in a database, a table stores information for a group of things which are known as fields and which together make up the records. देखिए जनरली टेबल में क्या होता है, there are some group of things which are known as the field and which things make the records. So let us learn what all these things means.
So first of all, data item or field or attribute. So a data item is the smallest unit of the named data. So it may consist of any number of bits or bytes. So a data byte and bits, दोनों में से कोई भी डेटा आइटम जो है वो हो सकता है. So here a data item represents one type of information and is often referred to as the field or data element. That is nothing but a data item. Then next one is the a record. So here a record is a named collection of data items which represents a complete unit of information. तो डेटा आइटम्स का एक कलेक्शन जो रहेगा उसको हम लोग रिकॉर्ड कहेंगे. एंड ये रिकॉर्ड जो है इट इज अ नेम्ड कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स व्हिच रिप्रेजेंट्स अ कंप्लीट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन. सो द नेक्स्ट वन इज द अ टेबल और अ रिलेशन. टेबल का दूसरा नाम जो है वो रिलेशन भी है. अ टेबल इज द नेम्ड कलेक्शन ऑफ ऑल ऑकरेंसेस of a given type of logical record, and a table is also called as the relation in relational databases. So this is nothing but the tables. Then next one is the fields or attributes. देखिए fields और attributes क्या होते हैं. Fields or attributes are the columns containing one type of information. एक type की information जहाँ पर रहेगी that are nothing but the fields or attributes. So next one is the records are the rows that representing one complete unit of information. एक complete unit of information records जो है वो दिखाते हैं. So ये information जो होती है it is logically related information होती है. And a logical record contents of all the fields, all fields के जो contents होते हैं वो logical record होता है. And the next one is the obviously table is the group of all the logically related records. So we will see one example. What are these tables? So अभी यहाँ पर देखिए सपोज मैं यहाँ पर कुछ आईडीज ले लेती हूँ. सपोज स्टूडेंट रोल नंबर, देन फर्स्ट नेम, then last name and class and marks. Oh, sorry, class and marks मुझको अलग अलग लिखते थे. Marks. ओके. सो अभी मैं यहाँ पर क्या कर देती हूँ 1 2 and so on. Okay, and names will be suppose I will write Vineet, then Shilpi. So I am taking some names. Anand, Anuja, then Vijay and so on. अभी यहाँ पर मैं सर ले लूँगी. सिंह, कुमार, पाटिल, शाह एंड अरोरा. एंड क्लास सपोज इनके रहेंगे सब 10th क्लास के स्टूडेंट्स से. Okay, and they are having marks like 89, 90, 78, 92, 90. ओके. सो अभी यहाँ पर देखिए ये जो आपको दिख रहे हैं स्टूडेंट रोल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, क्लास एंड मार्क्स. These are all nothing but the fields
all attributes. So ये जो दिख रहा है आपको स्टूडेंट रोल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, क्लास एंड मार्क्स, दीज आर फील्ड्स और एट्रीब्यूट्स. अगर हम लोग ये सिंगल रिकॉर्ड पकड़े, एक सिंगल रो पकड़े, तो उसको हम लोग कहेंगे रिकॉर्ड. देते हैं देखिए, रोल स्टूडेंट रोल नंबर इज 3, हिज नेम इज आनंद, सरनेम इज पाटिल, क्लास 10 एंड परसेंटेज. So this whole field is nothing but called as the record. यहाँ पर पूरी इंफॉर्मेशन रहेगी. सो अगर आप लोग एक एक पर्टिकुलर आइटम देखोगे, डेटा आइटम, उसको कहेंगे देखिए विनीत जो है एक डेटा आइटम है, सिंह जो है एक सेपरेट डेटा आइटम है, देन आनंद इज सेम वे, वन डेटा आइटम इज देयर, अनुजा इज वन डेटा आइटम, अरोरा is one data item, then marks 90 is one separate data item. So in this way you can apply different data items here one by one. So in a table, what we can say, each record is identified using a unique value. देखिए यहाँ पर यूनिक वैल्यू कौन कौन सी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, स्टूडेंट रोल नंबर, क्योंकि देखिए एक ही स्टूडेंट के नाम रिपीटली यहाँ पर आ सकते हैं. So in a table each record is identified with a unique value. That is, in a field of a table there are unique values for all the records. So this unique value is going to identify the record. So for instance यहाँ पर कंसिडर कीजिए, यहाँ पर स्टूडेंट रोल नंबर जो है इट इज हैविंग द यूनिक वैल्यूज फॉर ऑल द रिकॉर्ड्स. सो ये जो यूनिक वैल्यू रहेगी उसको हम लोग कहेंगे द प्राइमरी की. सो यहाँ पर देखिए, अगर प्राइमरी की आपको डिफाइन करनी पड़ेगी तो क्या, देखिए सिर्फ अभी सपोज शिल्पी 2 है यहाँ पर, ठीक है, शिल्पी कुमार इज देयर एंड शिल्पी शाह इज देयर. Now here the surname are same. Suppose देखिए विनीत पाटिल भी हो सकता है और आनंद पाटिल भी हो सकता है, ऐसे दो सरनेम्स जो हैं वो हो सकते हैं. सो यहाँ पर हम लोग यूनिकनेस नहीं कह सकते, क्योंकि एक स्टूडेंट का नाम रिपीटेडली हो सकता है, उसका सरनेम भी रिपीटेडली हो सकता है. यस, क्लास 10th ऑब्वियसली ये सबका तो सेम ही है, और यहाँ पर ऑब्वियसली मार्क्स भी दोनों को सेम हो सकते हैं. नाउ सपोज आनंद को भी सेम 94 मार्क्स मिले. सो यूनिकनेस कहाँ पर रहेगा, देखिए यहाँ पर यूनिकनेस सिर्फ स्टूडेंट के रोल नंबर्स में ही रहेगा और कहीं पर भी यूनिकनेस जो है वो नहीं रहेगा. सो दैट्स वाई ये जो यूनिक की रहेगी, हम इस यूनिक की को प्राइमरी की कहेंगे. सो दैट इज इन अ टेबल ईच रिकॉर्ड इज आइडेंटिफाइड with a unique value, then that is in a field of table there are unique values for all records. So this unique value identifies the record. So the field which is having the unique value is known as the primary key of that table. So this is nothing but the primary key of that table. So friends, let us now continue with the today's quiz session. The book which I have for today's lecture is Information Technology by Sumita Arora for class 10. So let us get started with that.
सो फ्रेंड्स चलिए आज का क्विज हम लोग स्टार्ट करते हैं. सो टुडेज आईटी क्विज. आज के क्विज में टोटल 20 क्वेश्चंस विल बी देयर and each question will be having 1 minute. So let's get started. So here is question number 1 on your screen. A company should have at least dash exit routes for proper evacuation during an emergency. Your options are A1, B2, C4 and D, none of the above. So your time starts now. Time up. So correct answer is B2. देखिए कंपनी के पास एटलीस्ट 2 एग्जिट रूट्स होने चाहिए फॉर प्रॉपर इवैक्यूएशन ड्यूरिंग एन इमरजेंसी. So here is the question number 2 on your screen. If you need to call 100, that is 100 or 112 in an emergency, what should you tell the dispatcher? First one, A, describe the emergency. B, give exact address of emergency. C, give your name and telephone number of the phone you are using. And D, all of the above. So your time starts now. So the correct answer is B. Give exact address of emergency. देखिए if you are going to describe the emergency, you are going to give your number and telephone number. It will be the wastage of time, and in emergency, each and every minute and second is important. So correct answer is आपको क्या करना है? Give the exact address of the emergency. Then question number 3 is on your screen. The employer or the company is responsible for administrating and managing workplace safety steps. True or false? Your time starts now. Time up. Yes,
एक कंपनी की यानी कि एक एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वर्क प्लेस सेफ्टी स्टेप्स जो है प्रॉपरली मैनेज करें. सो करेक्ट आंसर इज ए, ट्रू. Then question number 4 is here on your screen. Which of the following should be included at your home for first aid kit? Options are A. Hydrogen peroxide, B. Aspirin, C. Calamine solution, lotion, and lastly all of the above. So your time starts now. टाइम अप. सो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. जो यहाँ आपके फर्स्ट एड किट में जो घर पर आप लोग फर्स्ट एड किट यूज करते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड, एस्पिरिन और कैलेमाइन लोशन, ये तीन चीजें होनी चाहिए. Then we will move towards the next question, that is question number 5. Bhopal gas tragedy was happened due to lack of safety measures. True or false? Your correct answer waiting and time started. Yes, it is correct that Bhopal gas tragedy was happened due to lack of safety measures. बहुत ही बड़ा हादसा था ये. वहाँ पर near about 15,000 to 20,000 animals and human beings were suffered from this, and the death rate was also very high. So it was happened due to the lack of safety measures. Then question number 6, that is, it is okay to keep one password for all your accounts. So answers are A, true, B, false. Your time starts now. The correct answer is B, false. That is, it is not okay to keep one password for all your accounts. That is, if one account is getting hacked, then your all password will be there to hackers. Then question number 7, that is, we should prefer private browsing mode. True or false?
So your time starts now. So it is true that we should prefer private browsing modes to have the safety features. Then the question number 8, antiviruses help you to get rid of viruses. True or false? Yes, obviously it is true that antiviruses helps you to get rid of viruses. Then the question number 9 is on your screen. The act of buying an item online is called as A. E-shopping, B. E-ticketing, C. Both A and B, and D. None of the above. So your time starts now. The act of buying an item online is called as A. E-shopping. Then we will move towards the next question. A person who writes a blog is called as A. Blog, B. Blogger, C. Blogging, and D. Blogosphere. So your time starts now.
A person who writes a blog is called as the blogger. The blogger is the correct answer. And question number 11 is here on screen. Out of the following, which is or are the components of an email? A username, B domain, C @ and D all of the above. So your time starts now. सो करेक्ट आंसर इज डी ऑल ऑफ द अबव. जी हाँ, ये सारे कंपोनेंट के सिवाय, ये जब 3 कंपोनेंट्स के सिवाय ईमेल आईडी कंप्लीट होता ही नहीं है. दैट इज यूजर नेम इज कंपल्सरी, डोमेन नेम इज कंपल्सरी एंड @ इज कंपल्सरी. दैट इज फॉर्मेट इज यूजर नेम @ domain name. So all of these components are necessary for email. Then question number 12 is here on this screen. What are the types of wireless connection? A Wi-Fi, B WiMAX, C both A and B, and D none of the above. So your time starts now. So both Wi-Fi and WiMAX are the types of wireless connection. So correct option is C, both A and B. Then the question number 13 is here on screen. Wi-Fi hotspots are totally secure to use. True or false? Time starts now. Obviously, the correct answer is B. False. Wi-Fi hotspots are not secure to use. The next question is, that is, wireless router doesn't require ISP. True or false? Your time starts now.
It is obviously false that wireless routers doesn't require ISP. It requires actually ISP. The next question is, what is DSL? A is digital system line, B digital subscriber line, C differential system line link, and D none of the above. So your time starts now. So DSL stands for B डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, जो कि इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए यूज की जाती है. देन नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 16. व्हाट इज ISP? ऑप्शंस आर A इंटरनेट सिस्टम प्रोवाइडर, B इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, C इंस्टेंट सर्विसेज प्रोवाइडर, एंड D none of the above. So your time starts now. So the correct answer is ISP is B इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो कि इंटरनेट सर्विसेज के लिए यूज किया जाता है. सो क्वेश्चन नंबर 70 is here on your screen. For entering personal and financial information for online transactions, a URL must begin with A FTP, B HTTP, C HTTPS, and D any of these. Your time starts now. So the correct answer for entering personal and financial information for online transaction, a URL must begin with C HTTPS, that is Secure Hypertext Transfer Protocol. So the question number 18 is on your screen. What is IM? A. Instant mailing, B. Immediate messaging, C. Instant messaging, and D. None of the above. So your time starts now.
देखिए, व्हाट इज आई मीन्स इंस्टेंट मैसेजिंग, जैसे कि आप लोग ऑनलाइन चैटिंग वगैरह करते हो, सो उसको इंस्टेंट मैसेजिंग कहा जाता है। लेकिन जैसे कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, देन गूगल हैंगआउट्स आर देयर, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग, दैट इज live and real time chatting is nothing but that instant message. So the next question number 19 is here on your screen. Use of caps lock in chatting should be avoided as it is considered equivalent to A. Singing, B. Shouting, C. Threatening, and D. Complaining. So your time starts now. So use of caps lock in chatting should be avoided as it is considered equivalent to shouting. ठीक है, जैसे कि कैप्स लॉक आप लोग चैटिंग में यूज करते हो, सो उसको शाउटिंग की तरह, चिल्लाने की तरह कंसिडर किया जाएगा. सो दैट्स व्हाई इट शुड बी अवॉइडेड एज इट इज कंसिडर्ड टू एंड इक्विवेलेंट टू द शाउटिंग. उसको थोड़ा सा ऑर्गन भी कहा जाएगा. Then the next question, that is question number 20, is on your screen. The act of buying or reserving tickets online is called as dash. Your options are A. E-shopping, B. E-ticketing, C. Both A and B, and lastly D. None of the above. So your time starts now. So, the act of buying or reserving tickets online is called as per the name, e-ticketing. So, e-shopping में हम लोग देखा, you can buy items online, that is purchase goods online, and you can reserve the tickets online using the e-tickets. So friends, I hope you enjoyed today's session. So that's all for today's session. We will meet in the next session with new topic. Till then, bye. So the next feature for the plus and iconic subscribers. Yes, we are having the exclusive feature for plus and iconic subscriber, that is raise a hand. So you can now speak to your favorite educator in live class. Yes, obviously you can ask your doubts also. So now you can clear your doubts instantly with an option to have one-to-one discussion with your favorite educator in a live class. So you can participate in quizzes, vivas, and doubt solving sessions to take your exam preparation to the next level, obviously. And you can have the personalized and highly interactive live class experiences. So you can use my code, that is TD Live, for flat 10% off. So Unacademy, let's get it. So friends,
Unacademy is freedom to learn offer. So this Independence Day, get the freedom to learn. Yes, this is new offer only for CBSE class 9th. So student, this is the exclusive offer for CBSE class 9. That is, we are pleased to inform you that is our new exclusive offer for our CBSE class 9 learners. That is, if you take up a CBSE class 9 subscription for 2 years, then you will get the subscription of IIT, JEE, NEET Foundation and NTSC absolutely free. So what is this IIT, JEE, NEET Foundation and NTSC category all about? I will tell you about that. You can build the foundation for the IIT, JEE right from class 9th. So it is having the structured courses that will help you to crack the multiple Olympiads like NTSC, IMO and so on. Yes, obviously, and you can win the great national level scholarships. So you can save students 40% on your subscription price. So this is only for the first 500 CBSE learners, and the offer can be availed using the educator referral code. So you can use my educator referral code, that is TD Live. So just this is the limited time offer, and it is valid from the 11th of August 2021 to the 31st of August 2021. So students gets your subscription now. This is at limited period offer. देखिए दोस्तों, अनअकैडमी हर बार कुछ नया लाने की कोशिश करती है. सो इस बार जी हाँ, आप लोगों को जैसे कि पता होगा, you are having the last chance to win free Creative Corner subscription. So this offer is going to end on 23rd of the August 2020. म्हणजे हाँ, हमारी क्रिएटिव कॉर्नर सब्सक्रिप्शन की जो चांस है, इट इज गोइंग टू एंड. सो देखिए ऑफर्स कैसे, देखिए सब्सक्रिप्शन ड्यूरेशन, लाइक अगर आपका सब्सक्रिप्शन 12, 15 एंड 18 मंथ्स का है क्रिएटिव कॉर्नर का, then you will get that is a free Creative Corner subscription for 2 months. So whether it is plus or iconic based on your subscription. Then अगर आपका सब्सक्रिप्शन का ड्यूरेशन है 24, 36 and 48 months का, so you will get the free Creative Corner subscription for 4 months. जी हाँ, 4 महीनों के लिए आपको फ्री क्रिएटिव कॉर्नर का सब्सक्रिप्शन जो है वो मिलेगा. सो ये अगर आपका प्लस का सब्सक्रिप्शन है तो आपको प्लस का मिलेगा, अगर आपका आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन है तो आपका क्रिएटिव कॉर्नर का आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन जो है वो मिलेगा. नाउ नेक्स्ट वन इज दी, अगर आपका सब्सक्रिप्शन का ड्यूरेशन है फॉर 60, 72 एंड 84 मंथ्स का, इधर फॉर द प्लस और इधर फॉर द आइकॉनिक. सो आपको क्या रहेगा, फ्री क्रिएटिव कॉर्नर सब्सक्रिप्शन मिलेगा पूरे 6 महीने के लिए. इट इज टोटली फ्री. प्लस का है तो प्लस का मिलेगा, एंड आइकॉनिक का है तो आपको आइकॉनिक का 6 महीने का सब्सक्रिप्शन जो है टोटली फ्री मिलेगा. सो हरी अप, इट इज लिमिटेड पीरियड टाइम ऑफर, एंड यू कैन यूज माय कोड दैट इज गिवन हियर, दैट इज TD Live, to get the free subscription also for the Creative Corner. So this is your last chance to win free Creative Corner subscription, and the offer is going to end on 23rd of the August 2021. So choice is yours. So with Unacademy subscription, you will get with one subscription comes the great benefits, like you will get the unlimited access to 7 subjects. 7 सब्जेक्ट्स को आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा, एंड यू विल गेट द इंडियाज टॉप एजुकेटर्स टू चूज फ्रॉम. ऑब्वियसली आपको पूरा सिलेबस मिलेगा. यू विल गेट द फुल सिलेबस फॉर NCERT and as well as dedicated plus courses. And yes, obviously without Unacademy subscription, you will be having a lot of confusion. So jaldi kijiye students, choice is after all yours. So subscribe now before it is too late. So the next exams are, I think, just 2 months, right? So you can get the 10% discount on using the educator referral code. So please use my educator referral code, that is TD Live, so to get the 10% discount. So jaldi kijiye, hurry up, the time is getting over. So friends, we are having the mega launch every Mondays, as you know. So here we are having the Laksh Foundation batch for IIT and JEE aspirants. So ये बैच किसी लिए, देखिए फॉर CBSE क्लास 9 के लिए भी है एंड CBSE क्लास 10 के लिए. एंड यस, पहले हम लोग देखते हैं
CBSE क्लास 9 के लिए इट इज गोइंग टू स्टार्ट on the 31st of the August 2021. 31st August को बैच स्टार्ट होगी and we are having the subjects like maths and science with the expert teachers. Yes, obviously you are having the new batches for doubt clearing and NCERT exercises also. And also अगर आप लोग IIT JEE के एस्पिरेंट्स हो फॉर CBSE क्लास 10th, सो यहाँ पर भी आपकी जो लक्ष्य फाउंडेशन बैच है वो 31st August 2021 को स्टार्ट हो रही है. सो यू आर हैविंग द स्पेशल स्ट्रेचेस फॉर द मैथ्स एज वेल एज द साइंस. तो देखिए मैथ्स की जो डेट है वो 1 सितंबर को स्टार्ट होती है एंड साइंस इज गोइंग टू स्टार्ट ऑन द 31st of August 2021. सो वैसे ही सीबीएसई क्लास 10 के लिए IIT JEE एस्पिरेंट्स के लिए एक और CBSE क्लास 10 की बैच रहेगी, दैट इज लक्स फाउंडेशन बैच. It is for maths, it is going to start on 17th of September 2021, and for science, it is going to start on 31st of August 2021. So yes, obviously you are having the new batches for doubt clearing sessions and NCERT exercises. So students जो obviously class 9th and 10th के IIT and JEE के लिए interested हैं, they are having the golden chance for it. And yes, you can use my code, that is TD Live, for flat 10% off discount. So देख किस बात की है students, join our new Laksh Foundation batches. So friends, let me tell you about the basic plan about the plus subscription and also the advanced plan of the basic, that is iconic जो है ये plus का जो है advanced version रहेगा. देखिए plus में जो you are going to have the basic plan to get started, and yes obviously at iconic you can take your CBSE preparation to the next level with personal mentor. देखिए प्लस के फीचर्स क्या क्या है. यू आर हैविंग द इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स as well as the interactive live classes, then live tests and quizzes, then structured courses and PDFs also. And in iconic में क्या रहेगा, प्लस के जो फीचर्स है वो सारे के सारे रहेंगे और उसके साथ आइकॉनिक में आपको एडिशनल फीचर्स भी मिलेंगे. देखिए यहाँ पर भी इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स रहेंगे, देन इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, देन लाइव टेस्ट्स एंड क्विजेस, देन यू आर हैविंग द स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड PDFs आल्सो. सो यहाँ पर एडिशनल क्या है आइकॉनिक में, देखिए द पर्सनल मेंटर इज देयर टू सॉल्व योर डाउट्स. यू आर हैविंग द लाइव डाउट सॉल्यूशंस, लाइव इंटरेक्शन विथ योर मेंटर्स आल्सो, एंड यस ऑब्वियसली पेरेंट कनेक्ट भी यहाँ पर रहेगा, दैट इज टीचर पेरेंट कनेक्शन रहेगा यहाँ पर. एंड आपको आइकॉनिक का स्पेशल स्टडी पैनल जो है वो भी मिलेगा. सो यू कैन यूज माई कोड, दैट इज TD Live, फॉर फ्लैट 10% of discount for both, that is on the plus and iconic solutions. You can select the plus or iconic based on your choices. So उसके plans कैसे देखिए, अगर आप लोग CBSE का क्लास 9, 10th, 11th, 12th का लोगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा. अगर क्लास 10 का लोगे तो 10th, 11th, 12th आपको साथ में मिल जाएगा सब्सक्रिप्शन का. तो यहाँ पर देखिए पहले हम लोग प्लस का देख लेते हैं. इफ़ यू आर हैविंग द 3 month सब्सक्रिप्शन देन यू हैव टू पे 7,500 for the 3 months, that is 2,500 for per month. Now if you are having the 6 month subscription then you are have to pay 10,000 for the 6 months, that is flat 33% off. Then if you are having the 12 month subscription then you are going to pay 15,000, that is 1,250 per month. If you are going for the 15 month subscription then you will have to pay 18,000. If you are going for the 18 months then you will have to pay 20,000, that is 1,111 per month. Now if you are going for the 24 month subscription then you will have to pay 25,000 for the 24 months, that is 1,042 per month. If you are going for 36 months then you will have to pay 32,000 for whole 36 months and 889 per month. If you are going for the 48 month subscription उसमें आपको क्या लगेगा 40,000, 40,000 जो है पूरा का पूरा पैकेज रहेगा and 830 will be for per month. देखिए आज जितना आप लोग ज़्यादा पैकेज लोगे उतना ही आपका बेनिफिट और डिस्काउंट जो है वो बढ़ता जाएगा. सो वैसे क्लास का 9, 10th, 11th, 12th का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन देखिए the same case for 3 months, 6 months, 12, 15, 18, 24, 36 and 40 months. देखिए यहाँ पर 3 months का सब्सक्रिप्शन जो है वो
12,000 को रहेगा with 4,000 per month. Then next one is 6 months 17,000 रहेगा with 2,833 per month. Then 12 months का रहेगा 28,000. Then 15 months का रहेगा 32,000. 18 months का रहेगा 35,000. 24 months का रहेगा 48,000. 36 months का रहेगा 66,000 and 48 months का रहेगा 83,000. That is 1,729 per month. सो वैसे अभी आप लोग क्या कर सकते हो, क्लास 10, 11 और 12 का सब्सक्रिप्शन प्लस के लिए देख लीजिए. 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आपके लिए रहेगा 7,500 रुपीज़ के लिए. 6 मंथ का रहेगा 10,000 के लिए. 12 मंथ्स का रहेगा 15,000 के लिए. 15 मंथ्स का जो है आपके लिए रहेगा 18,000 के लिए. देन 18 मंथ्स का आपके लिए रहेगा 20,000 के लिए. एंड 24 मंथ्स का रहेगा 25,000 के लिए. एंड लास्टली 36 मंथ का जो है वो 32,000 के लिए रहेगा. And the same case for the Iconic, that is for class 10th, 11th and 12th subscription. That is 3 months का रहेगा आपके लिए 12,000. Then 6 months का 17,000. 12 months का 28,000. 15 months का 32,000. That is 2,133 per month. 18 months का रहेगा 35,000 के लिए. And 24 months का रहेगा 48,000 के लिए. Obviously वैसे क्या रहेगा 36 month का जो सब्सक्रिप्शन है लास्टली वो रहेगा 66,000 के. That is 1,833 per month with 54% discount. And yes, obviously you can use my code, that is TD Live, for flat 10% off discount. So students, जल्द से जल्द आपका जो सब्सक्रिप्शन that is based on your choice, that is Plus or Iconic, please सब्सक्राइब करके लीजिए. सो फ्रेंड्स, हर बार की तरह इस बार भी अनअकैडमी मेगा कॉम्बैक ला रही है. जी हाँ, वी आर इंट्रोड्यूसिंग इंडियाज लार्जेस्ट स्कॉलरशिप ट्रस्ट वंस अगेन, अनअकैडमी मेगा कॉम्बैक. सो इस बार यू कैन विन द स्कॉलरशिप वर्थ ₹2 crore. So link is given in the description box. So obviously this Unacademy Mega Compact is on every Sunday and you can use my code, that is TDLive, for the educator referral codes. So देखिए Unacademy Mega Compact बहुत से आप स्टूडेंट्स ने दिए होंगे, कुछ ने नहीं दिए होंगे. So let me tell you about that. So Unacademy Mega Compact Scholarship Tips, that is formula for your success in CBSE classes 9 and 10. You can win one scholarship worth ₹2 crore. देखिए लास्ट टाइम हम लोग जो ले लिए थे बैचेस उसके 1 crore के थे. So now we are having the 2 crore scholarship offers. So आपकी पढ़ाई के साथ साथ you can win the prizes also. And these Mega Compact Scholarship Tips are for CBSE classes 9th and class 10. So date लिख लीजिए. The upcoming Mega Compact is on August 29th, 2021 at 11 AM. So enroll online. लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुके हैं हम लोग पहले से ही. सो उसका फॉर्मेट देखिए कैसा रहेगा. यू विल बी हैविंग 30 क्वेश्चंस एंड 45 मिनट्स फॉर दैट. दिस क्वेश्चंस है एंड यू आर हैविंग द 45 मिनट्स टू सॉल्व दिस. द टेस्ट विल बी ऑब्वियसली अवेलेबल इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज. बोथ लैंग्वेजेस में आपको टेस्ट अवेलेबल रहेगी, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी. And test will be live. It will be the free live test on your Android application. So जल्दी कीजिए and enroll now for Unacademy Mega Compact. Date लिख लीजिए August 29 at 11 AM. So you can have the flat 10% off on Unacademy Plus and Iconic subscription. You can use my code, that is TD Live, for both Plus and Iconic subscription with flat 10%. And you can download the Unacademy app now. Get it on the Google Play Store and you can download it on the Apple Play Store also. Try its all of the features for free using my code, that is TDL. So students, that's all for today. We'll meet in the next session. Unacademy, let's